Before exam times come nearer, our question is how will I revise fast or forgot something important? What is that important? You also forgot to do something very important in starting of your new year sessions? Yes, that's revision. So, hey there, here's Rohit.Sewani. Welcome back to my channel. So in this video, we are going to see how to make revision super duper easier. Yeah. First, let's get going. Before going to a topic, first is commonly is notes. I have mentioned it, but yeah, notes I am not counting it in a video because these are tips for making a revision easy, not making notes. But yeah, notes are also very important for a revision, and one tip is that कि अपने notes या जो points लिख रहे हैं मेक देम वेरी स्मॉल, जो कि आपको पढ़ने में लगे ऐसे नहीं यार पहाड़ जैसे नोट्स बना दी इतने लंबे 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 पैराग्राफ पैराग्राफ. Huh, in a register means 15 to 20 lines you have written for your note session. And if you want me how to make notes efficiently or what are the mistakes during making notes, you can just comment down. I will be bringing a video on that also. Let's go with the first one. Yeah, uses of post-its or sticky notes. कहीं पे इसको पोस्टर्स, कुछ लोग इसको पोस्टर्स भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको स्टिकी नोट्स बोलते हैं. आई हैव गॉन विद आई हैव ब्रॉट विद बोथ नेम्स. या दीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग योर टाइम टेबल्स, शेड्यूल मेकिंग एंड ऑल. यू कैन मेक, आप इससे अपना स्केड्यूल भी बना सकते हैं. यू कैन जस्ट मेक स्केड्यूल कि भाई अंडर अ वीक स्केड्यूल, ऐसे एज यू कैन सी द इमेज लाइक स्टडिंग. बहुत लोग उसको इंस्पिरेशन के लिए कोट्स के तौर पे भी लिखते हैं और अपनी कॉपीज़ को जैसे नोट्स बनाते हैं. You can, in your writing notes, you can go with sticky notes also. Without, and you don't want to write, you can stick notes. So let us go with two types. दो types की रहते हैं. एक तो this is a broader one, wider. ये first type के हैं, first and second. So the first one are mostly used for histories के लिए, histories नहीं, history subject के लिए, या important dates के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. ऐसे इफ़ एनी वन हु इज़ टेकिंग हिस्ट्री ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी. आप इसमें डेट्स लिख सकते हैं. ऑन सो एंड सो डेट पानीपत वॉज फॉट और बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट. यू कैन राइट डेट, year name, and you can stick it on your door or study table or any place where you feel comfortable. Or whenever you are opening the door, this is basically, it is colorful and it might catch your eye. You can just see it. Here you are seeing that it will be memorized you very clearly. And yeah, the big ones you can also use. I can tell you for subjects like, see, for science also you can use it. इंटर रिलेट है हमारा सेकंड पॉइंट भी इससे, तो वो अपन देखेंगे अभी. बट या इंटर रिलेटेड तो है, वो बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट में. यू कैन यूज़ इट फॉर साइंस के टॉपिक्स के बाद उसमें आप थोड़े थोड़े बेसिकली छोटे पॉइंट लिखें. एंड आफ्टर दैट you can stick in your wall so that you can remember it nicely. And for maths you can go with this, or for maths it is not needed, it is much needed for formulas only, nothing much. Or if you wanted to symbolize in, yeah, now your doubt will be why you have said it for starting of the session. Wait, yeah, new year sessions. I have gone with the new year sessions so that for sticky notes it is not that you have to go only with history dates. You can mark like this also. ये मेरे examples हैं, मैं ऐसे कभी कभी use कर लेते हैं. For important you can mark with this. For question mark you can go with approval question mark. Yeah, these are, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया ऑफ माई सिस्टर्स नोट्स. बट या यू कैन गो विथ क्वेश्चन मार्क्स फॉर डाउट्स. जैसे आपके स्टार्टिंग के सेशन में आप खुद सेल्फ, या इफ़ यू आर गोइंग टू विथ सेल्फ स्टडी और एनीथिंग, तो आपको वो प्रॉफिटेबल हो कि फ्यूचर में अगर एनी डाउट्स आप अपने टीचर से डाउट पूछ पाएँ. स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में अगर आपको एंड में याद आ रहा है, आपके पास वो क्वेश्चन लिखा रहेगा, आप वोंट बी एबल नहीं, आप फॉरगेट नहीं करोगे उसको. आप क्वेश्चन पढ़ोगे एंड यू कैन आस्क योर नेक्स्ट डे व्हेन द पीरियड इज. सेकेंड इज make notes as fast as you can. If you are tired of writing notes, then go with highlighters to make quick notes, friends. Actually, yeah, if any one of you are, if many of you are very lazy, yeah, not many of you, but some, अगर नहीं, yeah, writing, not everyone is lazy, but yeah,
when the time comes for writing, everyone becomes lazier mucher. I also become sometimes, but yeah. So you can just highlight that with colorful highlighters also, and from that, by highlighting your book notes and your which copy notes, yeah, book notes, sources notes, you can take a bonus tip for making notes. How to make notes में आप sources भी ले सकते हैं, but yeah, आप उसमें वो करना हाइलाइटर से मार्क, एंड आफ्टर दैट उनमें से भी अगर आपको और थोड़े मोर ईजियर वे में अपने खुद के इस वाइडर नोट्स में लिख सकते हैं. दो सेकेंड टाइप है हमारा. थर्ड, इट इज़ अ बोनस टिप. टाइम फॉर बोनस टिप. या बोनस टिप. Bonus tip. As you can see here, it is make flashcards. What are flashcards? Flashcards, if you are making it anytime while making your revision के टाइम आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं तो आप फ्लैश कार्ड्स बना लें. एंड या अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप ये छोटे छोटे मीन्स आपके इसमें जा सकते हैं, अगर आप ये कैरी नहीं कर सकते हैं या आपसे लूजली आपकी घूम जाते हैं, सो फिर यू कैन make it into a binded copy or diary, like stick it somewhere like this. Like I loved it. Here he has used mind maps. You can just go. I don't want to destroy the image or image को मेरे को बिगाड़ना नहीं है. Just making my pen using my pen or pencil. I have just underlined it outerly. They have used sticky notes और ये flash cards plus भी हैं. यू कैन कैरी फ्लैश कार्ड्स लाइक दिस बुक ऑल्सो. अगर आपसे लूजली आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, ये फर्स्ट है कि क्लाउडी और इट इज़ शोन फॉर किड्स ऑल्सो. यार किड्स ऑल्सो उनको भी दिखाते हैं. ये मीन्स यू कैन गो विद द क्लाउड्स कि इस कलर ग्रेइश ब्लैकिश कलर के आपके वो हो जाते हैं, क्लाउड्स हो जाते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप दिस मच. वो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही था. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप दीज टिप्स में हेल्प यू बूस्ट अप योर रिविजन टेक्निक्स. टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग. बाय बाय. एंड या कमेंट डाउन अगर आपको नोट्स के लिए वीडियो चाहिए.